Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video, we will be discussing important current affairs for 19th of June. Session will be quite interesting and important. Stay tuned with us till the end. In this video, students, we will be talking about Bhupendra Yadav, who presided over the first assembly of IBCA in New Delhi. What is IBCA? International Big Cat Alliance. Then we will be talking about NDEM Light 2.0, Flood Hazard Zonation Atlas in Assam that has been launched, and ICRER has been launched recently by our Home Minister Amit Shah. We will be discussing these three things. Then we will be talking about Tiger Claw 2025 exercise held in Uttar Pradesh, and we will be talking about AI powered scheme for crop monitoring that has been recently launched. All these things and many more will be discussed in this video, so stay tuned with us till the end. If you are new here, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relative, neighbors, and let them know about this interesting platform. Also, we upload the daily current affairs video, students. That means this particular video is uploaded every day at 5 a.m. in the morning. So do watch this video early in the morning itself. Also, students, if you are new here, I want you all to like this video, right? And I want to see maximum likes on this particular video. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs. Ashwini Vaishnav, our Union Minister of Railways and Union Minister of Information and Broadcasting, and Union Minister of MEITY, Ministry of Electronics and Information Technology. He recently inaugurated India's largest Gati Shakti cargo terminal at Manesar. Where is this Manesar? Manesar is in Haryana. Right? So take a note of this. Ashwini Vaishnav ji, he inaugurated this India's largest Gati Shakti cargo terminal. That means cargo will be carried, goods will be carried through this particular train, right? And it will enhance the logistics of India. One more thing, remember students, in Manesar there was a plant of Maruti, and we see that Gurugram, it became Gurugram because Maruti came there and it started the development there, and then DLF played an important role. Now Maruti was in Haryana. Now Maruti is launching in Asia's third largest plant, that is the largest in India, and it is being developed at IMT Kharkhoda. Next thing, coming back to the news, India's largest Gati Shakti cargo terminal was recently inaugurated at Manesar by Ashwini Vaishnav, and during this event, Nayab Singh Saini, the Chief Minister of Haryana, was also present. Apart from this, if we talk about this Gati Shakti multi-modal cargo terminal, it can load up to 4.5 lakh automobiles annually, making it one of the largest, highest capacity automobile rail hubs. This will be a 10-kilometer dedicated rail link that will be connecting Manesar facility with Patli railway station in Haryana. And if we see here, the terminal is built under Prime Minister Gati Shakti National Master Plan with a total investment of 800 crore rupees. Apart from this, during this event only, Ashwini Vaishnav has announced the introduction of 100 new MEMU trains, MEMU trains. What is this MEMU? MEMU is your mainline electric multiple unit trains, right? 100 of these and 50 of the Namo Bharat passenger trains. This will enhance the rail connectivity and passenger services. So remember these things. Moving on, next is our Union Minister Bhupendra Yadav, as you can see him in the picture, has presided over the first assembly of IBCA that was held where it was held in New Delhi. What is IBCA? International Big Cat Alliance, right? This is an assembly, and this was the first assembly of this IBCA that was held in New Delhi. IBCA, remember, basically this is to protect the big cats, right? These big cats includes your tiger, leopard, lion, right? And these are your 7 big cats. To conserve them, to protect them, this alliance was launched, and 95 countries are a part of this, and there are 7 big cats that will be conserved under this. And in this meeting, in this assembly, 9 country delegations, that is Bhutan, Cambodia, Guinea, India,
Liberia, Somalia, Kazakhstan, they took part in this event. If asked about the ministry, it is Ministry of Environment, Forest and Climate Change that organized it. As here Bhupendra Yadav ji is, he is the Union Minister of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Moving on, next is Union Minister Amit Shah, our Home Minister. As you can see him in the picture, he has launched ICRER. First of all, we will focus on this. This ICRER, it is your integrated control room for emergency responses. Say for example, there is any disaster in an area, right? So in that time of disaster, in order to help the rescue agencies with the proper data, that in how much area is affected, what are the guidelines that you need to follow, right? And to help them with the coordinated response, this ICER, that is your integrated control room emergency response, was launched to help the people in the disasters at the time of disasters in India. So this is first thing. Second is NDEM Lite. Now what is this NDEM Lite? NDEM Lite 2.0 has been launched. This is a centralized digital system that will provide the coordination among the disaster response force, specifically in the remote areas. All the coordination or the coordinates, right, where they need to go, the communication at the time is also very crucial, because at the time of disaster the communication is the first thing that breaks. So in order to provide the proper communication, this NDEM Lite 2.0 has been launched, that is National Database for Emergency Management Lite 2.0. Then third thing that has been launched here is Flood Hazard Zonation Atlas in Assam, right? All these three things has been launched in Assam. Now what is this Flood Hazard Zonation Atlas? If we talk about this, this is the Atlas of Assam. Atlas of Assam that will guide the flood control authorities, the goal of which is to basically flood mitigation, right? Real-time data of flood will be provided. How much impact the flood has caused, it will be provided. The damage it has caused. Also the rivers there, right? What is the water level in them and how it can be impacted, it will be provided through this Flood Hazard Zonation Atlas. And all these three things has been launched in Assam. Launched by Amit Shah. If we talk about Assam, who is the Chief Minister of Assam? Himanta Biswa Sharma. Who is the Governor here? Lakshman Prasad Acharya. Moving on, next is we are talking about Tiger Claw 2025 exercise. This was recently held in Uttar Pradesh. Very important. Why? Because this is the first edition of this exercise, Tiger Claw. This exercise is held between India and United States of America. Right? Very important, students, take a note of this. Then in this exercise, Indian Air Force took part, and from Indian Air Force it is Garud Commandos that took part in this exercise, and from US it is United States Air Force that took part. This exercise started on 26th of May and it concluded on 10th of June in various parts of UP. Moving on, next is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has launched CROPIC, CROPIC. This is an AI powered scheme for crop monitoring. See students, as I have told multiple times also, in today's world we will be focusing on agriculture sector, and in the agriculture sector technology will be playing a very important role. AI, machine learning, they will be enhancing the agriculture output, be it in terms of quality or quantity. We will be seeing the usage of satellite data that will be provided through various organizations to the farmers, so that they can plan the agriculture ahead, the crops they need to crop ahead. Then apart from this, we will be seeing drones, right? UAVs will be used here. So this AI powered scheme for crop monitoring has been launched recently by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, that is CROPIC. What is this? Collection of real-time observation and photo of crop. See, in today's world, one more interesting thing is that if, say for example, a particular patch of crop is damaged because of some disease, but the farmer is not able to identify that particular disease. Now what will happen is, with the help of technology, the farmer will be able to click the picture of that particular crop that is being damaged because of some disease. That particular crop or the photo will be uploaded on a certain website that will be having the resource for the same, and that can provide the data, and the farmer will be getting a meaningful output that why that crop is damaged. It is because of any deficiency, or if there is a disease or any algae on it or any insect that is eating the particular crop out, that data will be provided to the farmer. It will be very beneficial,
right? So this CROPIC has been launched. This is a study to gather crop information using field photographs and AI based models. Next is Government of India approved third electronic cluster for Tamil Nadu. Now what is this electronic cluster will be beneficial for, right? This now this is electronic cluster. That means at this particular area, goods or components, not goods, components that are crucial for IT hardware will be developed here. This will be catering both our domestic and international market. That means the components, IT components that we will be developing here. Now this is the third electronic cluster or electronic manufacturing cluster that will be setting up in Tamil Nadu. See here, Ashwini Vaishnav, our Union Minister of Electronics and Information and Technology in MI Ministry of Information and Broadcasting and Ministry of Railways has announced central government's approval for the third electronic manufacturing cluster in Tamil Nadu via virtual address at an event hosted by Indian Institute of Technology, Madras in Chennai, Tamil Nadu. And the Government of India has been promoted electronic manufacturing in Tamil Nadu with projects on mobile phones, laptops and servers, and in March 2 EMCs worth 1112 crore rupees were approved for Tamil Nadu. Next is international affairs. Third United Nations Ocean Conference held from 9th of June to 13th of June in Nice, France, and we discussed the first part yesterday. This is the second part here. This is a 5-day long conference and it brought around 15,000 participants, including 60 heads of the states and government. There is a conference here that we can see, Nice Ocean Action Plan. Nice Ocean Action Plan. How you can remember it? It is Nice where this event was held, in Nice, France. Right? Take a note of this. And yesterday we discussed the focus was on Sustainable Development Goal 14, that is to preserve our life below water. Right? That is ocean, seas, and use them sustainably. Correct? Take a note of this. Apart from this, Dr. Jitendra Singh here has launched SEHEV. Dr. Jitendra Singh, he is our Union Minister of Earth Science, and he launched this SEHEV portal. This portal is a digital platform for ocean data. That means in any organization is working to preserve and clean the ocean, they can access this SEHEV portal in order to extract the data related to it. Right? So take a note, this was the third edition of United Nations Ocean Conference held from 19th to 13th of June in Nice, France. Moving on, EIU Global Livability Index has been released and Denmark's Copenhagen as the most livable city and Syria's Damascus is the least livable city. So two things remember. First, it is European Intelligence Unit EIU that has released this Global Livability Index and which has secured which is the globally the most livable city. It is Copenhagen of Denmark and the least livable city is Damascus of Syria. Correct? And here Copenhagen, it is the third time for the last 3 years they have secured the top position. Then next thing remember, Austria's Vienna, not 3 years, right? Correct this. Cancel this last point that they have been in this position for the last 3 years, right? For the last 3 years, it was Vienna that was in the top position. But this year, it is Copenhagen that has thrown them at the second position. So Vienna of Austria is now at the second position and Zurich at third position. And this is a data of 173 cities globally. If we see, this data is talking about stability, healthcare, culture and environment, education and infrastructure and many more. Correct? Take a note of this, students. Next is UNGA, United Nations General Assembly has established International Day Against Unilateral Coercive Measures, elects CITRAL members. So first of all, it is United Nations General Assembly, right? They have adopted a resolution during the 79th plenary meeting that was held in New York, USA, and it has proclaimed that 4th of December every year will be observed as International Day Against Unilateral Coercive Measures. It will be starting from this year 2025. This day raises global awareness about the adverse effect of unilateral economic, financial or trade restrictions that are enforced outside the framework of international law and the UN Charter. Here this coercive, it means force or threat to make someone do something against their will. Correct? There will be call to action, commemoration, global participation and many more.
Apart from this, United Nations General Assembly elected Ukraine and Netherlands to UNCITRAL, that is your United Nations Commission on International Trade Law. Next is Pakistan appointed the chair of the 1988 TSC, that is your Counter Terrorism Committee, vice chair of 1373 CTC. I repeat, TSC is your Taliban Sections Committee. So I correct myself. Pakistan appointed chair of the 1988 Taliban Sanctions Committee and the vice chair of the 1373 CTC, that is Counter Terrorism Committee, and this is a part of its 25-26 term as non-permanent member of United Nations Security Council. Correct, take a note of this. And Asim Aftikhar Ahmad of Pakistan has been appointed as the chair here of Taliban Sanctions Committee, Taliban Sanctions Committee for the period ending on 31st of December. Right, apart from this, Russia and Guyana, they have been appointed as the two vice chairs of this Taliban Sanctions Committee for 2025. Right, and here you can see that Pakistan has been appointed as the vice chair of 1373 CTC. So who has been appointed here as the chair? It is Algeria that has been appointed here as the chair of the 1373 CTC. Take a note of this. Where is the headquarters of United Nations Security Council? It is in New York, USA. Moving on to appointments and resignation. Anuradha Thakur appointed as the first women secretary of DEA. What is DEA? It is your Department of Economic Affairs starting from 1st of July 2025. She will succeed Ajay Seth, who retired on 30th of June. Right, so Anuradha Thakur, as you can see here in the picture, will be serving as the first women secretary of the Department of Economic Affairs. She was the ex officio part-time member of SEBI, right? And if we talk about SEBI, who is the chairperson? Tuhin Kanta Pandey. Moving on, next is Cristiano Ronaldo, very famous footballer. He is from which country? He is from Portugal, and he has been named as the global ambassador for Esports World Cup 2025. I repeat, Cristiano Ronaldo, right? And he will be the brand ambassador for Esports World Cup, right? And that is based in Riyadh, Saudi Arabia. It will be held in Riyadh, Saudi Arabia, correct? For the Esports World Cup 2025 to be held in Riyadh from 7th of July to 24th of August 2025. Moving on, acquisitions and mergers. We are talking about CCI approvals, Competition Commission of India approvals. First is the approval of the share 99.44% of the equity and preference shareholding of Gurugram Haryana based Ecom Express Limited, valued at 1,407 crore rupees by Gurugram based Delivery Limited, that is Delivery. The entire transaction of the acquisition involves cash. This is the first. Second is acquisition of SML Isuzu Limited by M&M. There's this Isuzu, right? This is basically a truck that you must see, correct? And this particular has been acquired by Mahindra and Mahindra, correct? So Mahindra and Mahindra acquired 58.96% stake in SML Isuzu Limited, formerly known as Swaraj Mazda Limited, for 555 crore rupees. If we talk about CCI, who is the chairperson of CCI? Ravneet Kaur. It was, where is the headquarter? It is in New Delhi, established in 2003. Next students, we are talking about environment, right? So new species of jumping spider has been recently discovered. This is the new species of jumping spider that has been discovered, and this species is named as Spartius carigiri. Spartius carigiri. This is the name of this new jumping species discovered in South India. Moving on, here you can see the name. Next is sports. U Mumba clinches their maiden ultimate table tennis title, right? U Mumba table tennis, correct? It is a Mumbai Maharashtra based franchise, and they have won their first maiden ultimate table tennis title with a dominant 8-4 win against Jaipur Patriots in the 6th UTT final held at the EKA Arena in Ahmedabad, Gujarat. Moving on to obituary students. Renowned ISRO scientist and Tamil science writer Nellai Su Muthu has recently passed away, and he passed away in Trivandrum, Kerala at the age of 74. He was born on 10th of May 1951 in Tirunelveli district of Tamil Nadu. Then next students, Sangeet Natak Academy awardee, Kathak exponent Mangala Bhatt has recently passed away in Hyderabad, Telangana at the age of 62. She was born in Maharashtra in 1963.
3 and she has recently passed away. Then next is important days. International day for Next is important day, students. International Day for Countering Hate Speech is observed on 18th of June. It is to basically raise awareness about the discrimination we are facing and the hate speech that is going on. There is a theme here: hate speech and AI nexus, building coalitions to reclaim inclusive and secure environments free of hatred. Right? And this day was first observed in 2022. Where is the headquarter of United Nations? Also in New York. And who is the Secretary General of United Nations? Antonio Guterres. Next is Sustainable Gastronomy Day, observed on 18th of June. This day is observed on 18th of June to raise awareness about the importance of sustainable agriculture food system. This day is observed by UNESCO and United Nations Armed Food and Agriculture Organization. First observance of this day was in 2017. Next, World Autistic Pride Day, observed on 18th of June. Autistic Pride Day, right? This day is observed basically to raise awareness about the individuals who are having autism spectrum disorder, ASD, right? And the theme here is unapologetically autistic, right? This is the theme here for the World Autistic Pride Day. Also, as you can see, this symbolizes somewhere rainbow. So rainbow infinity is the symbol here that represents this day. Then next is International Picnic Day, observed on 18th of June. This day is to basically celebrate the joy of picnicking, right? And involves the joy of having meal outdoor with family and friends. So take a note of it. Now students, that's all for the day. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning. Next, in June, United Nations General Assembly elected 5 countries as the non-permanent members of United Nations Security Council 2026-2027 term. Which of the following was not among them? And they will be here for the 2 years. Right? Among the following, if we see, Norway is not among them. Latvia, Liberia, Colombia, Bahrain. Right? And these are the countries that were elected here, right, as the non-permanent members of the United Nations Security Council. Correct? And these countries will be replacing Algeria, Guyana, Sierra Leone, South Korea, and Slovenia. Next, one more add here, Democratic Republic of Congo, the 5th one, instead of Norway. Next is identify the mutual fund company that launched India's first index fund tracking Bombay Stock Exchange 1000 total return index in June 2025. It is Motilal Oswal Mutual Fund. Next, as per the approval by the Competition Commission of India on June, Warburg Pincus LLC will acquire up to 9.99% of the paid up share capital of IDFC First Bank Limited. Next is Pobitora Wildlife Sanctuary. It is located in Dash. So Pobitora Wildlife Sanctuary, it is located in Assam. And as per the census of 2022, as per the 2022 rhino census, Povitra, it houses 107 one-horned rhinos. So take a note of this information also, right? And this is the highest density of rhinos that are found in India. And this sanctuary, it reported 0 rhino mortality. Next, which state in India achieved 100% success rate in the Foundation Literacy and Numeracy Assessment Test under the Understanding of Life Learning for All in Society, that is Ullas Nav Bharat Sashaktra Karyakram in June 2025. So which state in India achieved 100% success? It is Tamil Nadu. Next, what is the revised minimum land requirement in hectares for setting up semiconductor manufacturing unit in multi-model SEZ as per the Special Economic Zones Amendment Rules of 2025 as notified by the Ministry of Commerce and Industry in June? So what is the revised minimum land requirement? It is 4 hectares of land minimum requirement for setting up this SEZ. Setting up semiconductor manufacturing unit in the multi-product SEZ. Next, India was elected as one of the 18 new member nations to the United Nations Economic and Social Council by United Nations General Assembly for the term 2026 to 2028.
Next, India secured which rank in the Climate Change Performance Index 25, topped by Denmark at the 4th position, with the first 3 positions remaining vacant. So India secured which position? India secured 10th position here with right, and in this Climate Change Performance Index, and it was topped by Denmark at the 4th position. Correct, I repeat. So India at the 10th position, topped by Denmark, right? Take a note of this. Next, why 4th position? Because the first 3 position, it is said that there were no countries that are performing up to the level that is required to make sure that our climate is safe. Next, financial technology company Wise, formerly known as TransferWise, received in principle approval from RBI to operate in which category for export transactions? It is payment gateway or payment aggregator cross border, not payment gateway, payment aggregator cross border. What is payment aggregator cross border and what is simply payment aggregator? Payment aggregator is when you can receive the money or send money to the merchants within India, and cross border is when within the different countries also around the globe you will be able to send and receive payment through the merchants. Next, Central Bank of India completed the acquisition of dash equity stake in Future Generali India Life Insurance Company for a cash consideration of 57 crore rupees as a part of insolvency process. So CBI completed the acquisition of 25.18% equity stake in Future Generali India Life Insurance Company for a cash consideration of 57 crore rupees as a part of insolvency process. Next, identify the organization that along with Dassault Aviation SA signed 4 production transfer agreements to manufacture the fuselage of Rafale fighter aircraft in India for both Indian market and global exports. It is Tata Advanced Systems Limited, and this marks the first time that Rafale fuselage will be produced outside France, that is in India, and this will boost Make in India and Atmanirbhar Bharat initiatives. Next, which organization will be awarded with the ISO 22301 2019 certification? It is British Standards Institution. Australian all-rounder Glenn Maxwell. So Glenn Maxwell has announced retirement from ODI, bringing an end to a distinguished 13-year-old career. He has been part of 2 World Cup winning squads of Australia in ICC Men's Cricket World Cup in 2015 and 2023. So right option here becomes option 4th. Next, which 2 global companies' low Earth orbit satellites constellations are expected to support India's defense sector with faster and more reliable communication as announced in May 2025? So which 2 global companies' low Earth orbit satellite constellations are expected to support India? It is OneWeb and SpaceX. OneWeb is of UK and SpaceX is of Elon Musk of USA. Next, what is the maximum investment limit for retail individual investor in IPO as per the Securities and Exchange Board of India? So maximum investment limit for retail individual investor in IPO, it is 2 lakh rupees. Right, moving on. Next is Nicaragua recently became 101st member to officially approve the agreement on fisheries subsidies of World Trade Organization. Right, with this milestone, WTO is poised to roll out fisheries funding mechanism, commonly referred to as WTO Fish Fund. Next, as per RBI data released in June, Dash accounted for the longest or largest share of total bank deposits at 59.5% in FY25. So as per RBI data released in June, term deposits, right, they accounted for the largest share of the total bank deposit, because we are seeing that people are not investing money in fixed deposits or not keeping in bank, rather they want to earn money and they want to invest the money in the stock market, right, which is also a different case scenario. Next is name the organization that in June 25 projected India's GDP growth for FY26 at 6.3% in their economic outlook of 25, issue one titled Tracking Uncertainty Reviving Growth. Which is this organization we are talking about? It is OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. This is the organization. They have released this
Data Economic Outlook 2025 Issue 1 Tackling Uncertainty and Reviving Growth, in which they are projecting India to grow by 6.3% in FY26. Next is mention the name of the person elected as the 14th President of the Republic of Korea in June 24, succeeding Yoon Suk Yeol. So Lee Jun Suk, I correct not this, Lee Jae Myung, right, is the 14th President of South Korea, and he succeeded Yoon Suk Yeol. Next, in May, ACC Appointments Committee of the Cabinet approved the extension of Swaroop Kumar Shah's tenure as MD and CEO of which public sector bank? So, Swaroop Kumar Shah has been appointed as the MD and CEO of Punjab and Sindh Bank. Next, identify the correct statement regarding the IPL 2025 whose final was held at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, Gujarat. If we look at the options here, option A and B are only right. That is, Royal Challengers Bangalore secured their first ever IPL victory by defeating Punjab Kings in the final, and Sai Sudarshan won the orange cap. Correct? C is wrong here, right? That means Surya Kumar won the Emerging Player of the Season award with the prize money of 10 lakh rupees. No. So who has won the Emerging Player of the Season award? It was won by Sai Sudarshan, right? And he is from Gujarat Titans. Correct? Take a note of this. And he is also the person who won the orange cap. That is, orange cap is for the most runs. Orange cap is for the most number of runs, right? Most number of wickets, it is purple cap. Next, which country hosted the 39th COSPAS SAR-SAT, that is Space System for the Search of Vessels in Distress, Search and Rescue Satellite Aided Tracking Joint Committee meeting for the first time on 27th of May. So which country hosted it? It was hosted by UAE, United Arab Emirates. Next, mention the Indian university that recently developed the India's first gene-edited sheep in May using the CRISPR-Cas9 gene editing technology. It is Sher-e-Kashmir University of Agriculture, Science and Technology. Next, which of the following inaugurated the new unified headquarters of the Quality Council of India at the World Trade Center, New Delhi on 5th of June? It is Ministries of Commerce and Industry. Next, during a 3-day visit of the President of Prague, Santiago Pena, to India in June, Union Minister for External Affairs Dr. S. Jaishankar and Ruben Ramirez, the Minister of the Foreign Affairs of Prague, they have signed a memorandum of understanding that will be establishing a joint commission mechanism. And also remember, this here, he was on a visit to India, correct? And his visit was also held at great significance as both India and Prague commemorated the 64th anniversary of the establishment of the diplomatic relation between the two countries. Next, which two wetlands in Rajasthan were newly designated as the Ramsar sites as announced by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav? So, which two wetlands? They are Khichan and Manar. Right, these are the two wetlands that have been declared as the Ramsar sites. Now we see Rajasthan, it has a total of 4 Ramsar sites, and with this India has a total number of 91 Ramsar sites, that is the highest in Asia and third globally. Highest is in UK with 175 Ramsar sites, and Mexico on second position with 142 Ramsar sites, and India is on the third position now. Next, India won the presidency of Dash, a global administrative body for 2025 to 2028. So, India has won the presidency of International Institute of Administrative Sciences, IIAS. This is for the term 2025 to 2028. Next, students, is our homework section. First question is, New Flamingo Sanctuary. New Flamingo Sanctuary has been established where in India recently? Name that state. Then tell me India's first e-waste, electronic waste eco park will be established where? Third question, tell me recently India's first underwater museum will be coming where?
Fourth question, tell me recently Goa's product got GI tag, name that product. And fifth question, recently Punjab government, okay, I have given the answer. Let's move to the next. Tell me recently which is that state that has performed the best, top or best in terms of wind energy generation, name that state. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 19 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, जो कि न्यू दिल्ली में हुई। इसको प्रिजाइड किया गया भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। देन हम बात करेंगे 3 इनिशिएटिव की, ICRER, NDEM लाइट 2.2 एंड फ्लड हजार्ड जोनेशन एटलस की, जो कि असम के लिए लॉन्च किए गए हैं डिजास्टर्स के टाइम पे प्रॉपर गाइडेंस हेल्प करने के लिए। इन सबको डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे पहला एडिशन ऑफ टाइगर क्लॉ हमें देखने को मिला इंडिया और यूएस के बीच में। देन हम बात करेंगे CRO PIC की, इसको डिस्कस करेंगे एंड मैनी मोर न्यूज़ रहेंगी आज की वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं स्टूडेंट्स, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सभी के साथ, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम डेली सुबह 5 बजे ये वीडियो अपलोड करते हैं, तो ये वीडियो जरूर देखा करो, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना स्टूडेंट्स, आई वांट टू सी मैक्सिमम लाइक्स आज की वीडियो पे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का लार्जेस्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, कहां पर? मानेसर में। मानेसर कहां पर है? हरियाणा में, राइट। इससे क्या होगा? हमारी लॉजिस्टिक्स बेटर होती हुई दिखेगी, कार्गो लॉजिस्टिक्स बेटर होती हुई दिखेगी। इवन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये लॉन्च किया गया है, इसके अंडर हम देखेंगे अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, या फिर हम बोले ऑटोमोबाइल्स है, उसका हमें एक जगह से दूसरी जगह जो आपका कार्गो है वो और अच्छा होता दिखेगा। 4.5 लाख ऑटोमोबाइल्स हमारी बेटर होती हुई दिखेंगी, जिसकी जो लोड है वो इतना इसका लोड रहेगा इस गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का, जिससे आप देखेंगे इंडिया की हाईएस्ट कैपेसिटी ऑटोमोबाइल रेल हब्स ये रहेगी। इसी के साथ साथ अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा 2 और चीज़ यहाँ पे इनॉग्रेट की गई, वो थी 100 MEMU ट्रेन्स को। ये क्या है? मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन्स 100 ये लॉन्च की गई, एंड 50 नमो भारत पैसेंजर ट्रेन्स यहाँ पे लॉन्च की गई, जिससे रीजनल कनेक्टिविटी एंड पैसेंजर सर्विस और बेटर होता हुआ हमें दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.5 लाख ऑटोमोबाइल्स एनुअली की कैपेसिटी रहेगी। 10 किलोमीटर का ये डेडिकेटेड रेल लिंक रहेगा, जो कि मानेसर को पटली रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करेगा। एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें, 800 करोड़ की लागत से इसको प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंडर इसको बिल्ड किया गया। मूविंग ऑन। अच्छा, एक चीज़ और देखो, गुड़गांव जो डेवलप हुआ ना स्टूडेंट्स, वो हुआ था जब यहाँ पे मारुति आई थी, वो आई थी मानेसर में, राइट। अब मारुति एशिया का 3rd लार्जेस्ट प्लांट बना रही है, कहाँ पर? IMT खरखौदा में। काफ़ी बड़ा प्लांट है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, इनके द्वारा प्रिजाइड किया गया ओवर द फर्स्ट असेंबली मीट ऑफ IBCA। IBCA क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये IBCA बेसिकली 7 बिग कैट, जो कि आपकी टाइगर, लेपर्ड, जैगवार्स, लायन, इनको कंजर्व करने का, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, राइट। एंड यहाँ पर इनके द्वारा इस मीटिंग, जो कि ये पहली मीटिंग थी IBCA की, उसमें जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी, वहाँ पे इन्होंने प्रिजाइड किया। टेक अ नोट ऑफ दिस, 9 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिला था यहाँ पे, वेरियस मिनिस्टर डेलीगेशंस का। भूटान, कंबोडिया, गिनिया, सुरीनाम, सोमालिया, कजाकिस्तान, इंडिया, लाइबेरिया, एस्तवानी, इन सब का पार्टिसिपेशन देखने को मिला था।
मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा असम में डिजास्टर को प्रोटेक्ट या फिर डिजास्टर आ जाए तो उस टाइम पर हम कैसे अपने आप को कंजर्व कर सिक्योर कर सकते हैं, एंड उस टाइम पर जो डिजास्टर प्रोटेक्शन फोर्स होती हैं राइट, वो उनको कैसे डाटा मिले, वो क्या अपने प्रोसेस होंगी, करेक्ट, वो कहाँ से डाटा सिक्योर करेंगी, उनकी क्या गाइडलाइंस होंगी, उनके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लॉन्च की गई। पहली है ICRER। ये ICRER क्या है, ये है आपका इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पांस, कि अगर मान लो कोई डिजास्टर आ जाता है अक्रॉस इंडिया तो उस टाइम पर सैटेलाइट की मदद से यहाँ पे डाटा पहुंच सके एंड इंस्टेंटेनियस जो रिस्पांस है वो वहाँ पे पहुंचाया जा सके, रिलीफ वहाँ पे पहुंचाया जा सके। दूसरा आ जाता है NDEM लाइट 2.0, ये लॉन्च किया गया। ये बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सिस्टम है जो कि आपके रिमोट एरियाज में काम करेगा एंड डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस को कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराने का काम करेगा, इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब भी डिजास्टर आता है तो कम्युनिकेशन एकदम बैठ जाता है, ठप हो जाता है राइट, उस टाइम पर ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और तीसरा है फ्लड हजार्ड जोनेशन एटलस, ये एटलस लॉन्च किया गया है। बेसिकली यहाँ पे गोल क्या रहेगा कि वहाँ पे आपके मान लो जो रिवर्स हैं राइट, वहाँ पे उस पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, कितना पानी है उसमें, लेवल क्या है उसका राइट, अगर फ्लड आ जाती है तो फ्लड के टाइम पे कैसे जो पानी का बहाव होगा, रियल टाइम डाटा प्रोवाइड कराया जाएगा, एंड फ्लड को कैसे हम रोक सकते हैं, करेक्ट, क्या क्या हमें प्रोसेसेस को अपनाना पड़ेगा, और फ्लड आ जाती है तो ये जो NDRF की टीम्स होती हैं ये कैसे रिस्पॉन्स करें, किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। ये बेसिकली एटलस रहेगा राइट, एटलस एक तरीके का मैप हो जाता है। तो ये 3 चीज़ लॉन्च की गई हैं असम के लिए अमित शाह जी के द्वारा, होम मिनिस्टर के द्वारा। असम की अगर मैं बात करूं तो असम के चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, हिमंता बिश्वा शर्मा। गवर्नर कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। एंड कैपिटल क्या रहेगी यहाँ पर, ये आपका होमवर्क है। नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे टाइगर क्लॉ 2025 एक्सरसाइज की। यूपी में हमें देखने को मिला इस एक्सरसाइज को, एंड ये फर्स्ट एडिशन है इस एक्सरसाइज का, पहला इंडिया USA स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज। इंडियन एयरफोर्स एंड US एयरफोर्स के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया, एंड इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किसका पार्टिसिपेशन देखने को मिला, गरुड़ कमांडोज का पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला इस एक्सरसाइज में। 26 मई से लेके 10 जून तक ये एक्सरसाइज चली है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने लॉन्च किया CROPIC, जो कि एक AI पावर्ड स्कीम है फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग। देखो स्टूडेंट्स, ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि अब क्या है, AI आ गया है, ड्रोन्स आ गए हैं राइट, तो अब हम सैटेलाइट की मदद से फार्मर को डाटा दे सकते हैं जो कि उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि कब क्रॉप को हमें ग्रो करना है, कब बारिश हो सकती है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है राइट। देन ड्रोन की मदद से स्प्रेइंग में काम आ सकता है हमारा, एंड ये सारा हमें डाटा प्रोवाइड कर सकता है। AI की मदद से हमें डाटा मिल सकता है कि कैसे हमें अपनी क्रॉप्स को सेव रखना है, क्या चीज़ों का हमें क्या क्या चीज़ें उसमें सॉइल में देनी है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, एंड मैनी मोर, करेक्ट। इवन आज के टाइम पे आप देखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसके अंदर भी हम देखेंगे कि आप फोटो खींचो किसी एक पर्टिकुलर एरिया की क्रॉप की जो कि आपको लग रहा है खराब हो गई है, आप उसको अपलोड करो इनकी वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे, आपको AI की मदद से एंड मशीन लर्निंग की मदद से एक मीनिंगफुल आउटपुट मिल जाएगा कि ये जो डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, या ये जो क्रॉप में डिजीज लग गई है, एल्गे लग गई है या फंगस लग गई है, ये कैसे ठीक होगी, इसका कारण क्या है, आपको क्या न्यूट्रिशंस देने हैं या किस दवाई का यूज करना है ताकि ये हट सके। तो ये बहुत ज़्यादा गेम चेंजर है राइट, इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी फार्मर्स को जो कि बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इससे हमारी क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर में, करेक्ट। तो ये CROPIC क्या है, कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स राइट, ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, जो कि बेसिकली फील्ड की फोटोग्राफ की मदद से एंड AI की मदद से, वेरियस मॉडल्स की मदद से हमें मीनिंगफुल आउटपुट देता हुआ देखेगा। इसके बाद आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3rd इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर अप्रूव किया है तमिलनाडु के लिए। देखो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बनाया जाएगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा, एंड डोमेस्टिक नीड एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट की नीड को यहाँ पे पूरा किया जाएगा इसके थ्रू। 3rd इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर राइट, तमिलनाडु में। एंड हम देख रहे हैं अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे MEITY मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं, इनके द्वारा गवर्नमेंट के अप्रूवल से ये लॉन्च किया गया है, जिससे तमिलनाडु में हम देखेंगे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, सर्वर्स, इनके लिए जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगी।
मूविंग ऑन, इंटरनेशनल अफेयर्स पर आ जाते हैं। इसका पार्ट 1 हमने कल डिस्कस किया था। यह है 3rd एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस, 9 जून से लेकर 13 जून तक हुआ नाइस, फ्रांस में हमें यह देखने को मिला, राइट। नाइस से एक याद रखेंगे, इसकी जो एक थीम आप याद रखिए वो है नाइस ओशन एक्शन प्लान, नाइस से याद रखेंगे, राइट। ये आपका बेसिकली एक आपका कॉन्फ्रेंस है, राइट, एक इसकी थीम कह सकते हैं जिसके ऊपर यहाँ पे काम किया गया। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा, लाइफ बिलो वाटर, कि हम वाटर में, ओशंस में, सीज में पॉल्यूशन कम करें एंड उसको सस्टेनेबली यूज करें। यहीं पे एक और चीज, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस है, इनके द्वारा सहव पोर्टल को लॉन्च किया गया। ये सहव पोर्टल बेसिकली काम क्या करेगा, जैसे मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी कंपनी को किसी एरिया में जाके ओशन में वहां पर क्लीनिंग करनी है, तो उससे रिलेटेड जो ओशन का डाटा होगा वो सहव पोर्टल से एक्सेस कर पाएंगे, जिससे उनके डिसीजन मेकिंग और बेटर हो सके। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इनके द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को रिलीज किया गया, जो बताता है कि कौन सी सिटी ग्लोबली बहुत बेस्ट है रहने के लिए, मतलब टॉप पर है रहने के लिए, राइट। ये जो इंडेक्स है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसमें ऑलमोस्ट 180 कंट्रीज का ये डाटा रहेगा, ऑलमोस्ट 173 सिटीज का ग्लोबली ये डाटा रहेगा, जिसको यहाँ पे एसेस किया गया, उनका इंडेक्स बनाया गया। एंड डेनमार्क की कोपेनहेगन, इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी है। इससे पहले ऑस्ट्रिया की वियना यहाँ पे टॉप करती थी, पिछले 3 सालों से वही कर रही थी, लेकिन इस बार कोपेनहेगन फर्स्ट है, सेकेंड वियना, थर्ड पे आ जाता है जुरिच स्विट्जरलैंड की, करेक्ट। एंड डेमास्कस जो कि सीरिया की है, ये लीस्ट लिवेबल सिटी है। क्या क्या क्राइटेरियाज रहते हैं यहाँ पर, तो क्राइटेरियाज देखें तो जैसे आपका स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। एंड अगर हम देखें टॉप 10 सिटीज में से तो इंडिया की कोई भी सिटी यहाँ पर लिस्ट नहीं की गई है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने स्टैब्लिश किया इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोर्सिव मेजर्स। कोर्सिव क्या होता है कि जबरदस्ती अपनी बात मनवाना यूजिंग अटैक्स, मतलब फायर पावर, राइट, बल का यूज करके, फोर्स का यूज करके किसी को फोर्स करना टू डू अगेंस्ट देयर विल, राइट। तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोर्सिव मेजर्स, ये डे ऑब्जर्व किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा, मतलब करा जाएगा, पहली बार ये डिक्लेयर किया गया है एंड पहली बार ऑब्जर्व किया जाएगा 4 दिसंबर 2025 को इस साल में, राइट। पहले फर्स्ट एडिशन रहेगा इसका, सो टेक अ नोट ऑफ इट। चलिए नेक्स्ट आता है, इसी के अंदर याद रखेंगे यूक्रेन एंड नीदरलैंड को लेट किया गया टू UNCITRAL मेंबर्स के में। नेक्स्ट आ जाते हैं पाकिस्तान, इनको अपॉइंट किया गया चेयर ऑफ 1988 तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयर अपॉइंट किया गया पाकिस्तान को, एंड पाकिस्तान को ही वाइस चेयर अपॉइंट किया गया 1373 CTC काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयर। यहाँ पे वाइस चेयर बने हैं ये, तो यहाँ पे चेयर कौन रहेगा काउंटर टेररिज्म कमेटी का, तो अल्जीरिया रहेगा, राइट। एंड अब चेयर अपॉइंट किया गया है 1988 तालिबान सैंक्शन कमेटी का, तो यहाँ पे जो चेयर है वो कौन रहेंगे, पाकिस्तान को कौन डिनोट करेंगे यहाँ पे, असीम अहमद। ये इवन बोला गया कि ये प्रेसिडेंट ऑफ USA डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ये भी डिनर पे, लंच पे मिलेंगे, नॉट डिनर, लंच पर मिलेंगे, राइट, मतलब खाने पे मिलेंगे ताकि फर्दर एक्शन प्लान को डिस्कस किया जा सके। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे स्टूडेंट्स। अनुराधा ठाकुर, इनको अपॉइंट किया गया फर्स्ट वीमेन सेक्रेटरी ऑफ DAE डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की, ये पहली वीमेन सेक्रेटरी अपॉइंट की गई हैं, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड ये सक्सीड करेंगी किनको, अजय सेठ को। ये आप सर्व कर रही हैं एज द एक्स ऑफिशियो पार्ट टाइम मेंबर ऑफ सेबी सिंस 1 जुलाई 2025, करेक्ट। एंड चेयरपर्सन कौन है सेबी के, तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो काफ़ी फेमस फुटबॉलर हैं, पोर्चुगीज से बिलोंग करते हैं, अभी सऊदी अरेबिया में उनके क्लब के लिए खेल रहे हैं, अल नसर के लिए, राइट, उनके कैप्टन है ये। तो अभी इनको ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 का, जो कि अभी हमें सऊदी अरेबिया रियाद में देखने को मिलेगा। 7 जुलाई से 24 अगस्त तक ये ई स्पोर्ट्स हमें वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा इसका, एंड इनके ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके बाद आ जाते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पे। सबसे पहले हम बात करेंगे, CCI ने अप्रूव किया मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक्विजिशन। इन्होंने एक्वायर किया 58.96% स्टेक इन SML आईसुजू लिमिटेड, जिसको पहले स्वराज माजदा लिमिटेड कहते थे, 555 करोड़ की लागत से। देन दूसरा एक्विजिशन है शेयर होल्डिंग ऑफ ईकॉम एक्सप्रेस लिमिटेड बाय डिलीवरी लिमिटेड, मतलब 99.44% ऑफ द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर
ऑफ गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड ईकॉम एक्सप्रेस लिमिटेड ईकॉम, राइट, जो कि वैल्यूड है 1407 करोड़ रुपीस का, ये एक्वायर किया जाएगा डिलीवरी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, राइट। अभी एक नई जंपिंग स्पाइडर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नई जंपिंग स्पाइडर की स्पीशीज डिस्कवर की गई है। इसका नाम रखा गया है स्पार्टियस कारीगरी, कर्नाटका में ये डिस्कवर की गई है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स पर आते हैं। यू मुंबा, ये आपका एक फ्रेंचाइजी है मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड की, राइट। ये यू मुंबा टेबल टेनिस, इन्होंने अपना पहला मेडन अल्टीमेट टेबल टेनिस टाइटल को जीत लिया है, जयपुर पैट्रियट्स को 8-4 से हरा के फाइनल में इन द 6th यूटीटी फाइनल, जो कि EKA एरेना में हुआ, अहमदाबाद गुजरात में। फिर आ जाते हैं ओबिट्री के ऊपर स्टूडेंट्स। रिनोन्ड इसरो साइंटिस्ट एंड तमिल साइंस राइटर नेल्लाई सुमुथु, इनका रिसेंटली निधन हो गया है, राइट। ये फॉर्मर साइंटिस्ट हैं इसरो के, जिनका भी निधन हो गया है। इसके बाद आ जाते हैं संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी कथक एक्सपोनेंट मंगला भट्ट, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये इनका निधन हो गया था हैदराबाद तेलंगाना में एट द एज ऑफ 62। फिर इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट डेज पे। इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच, 18 जून को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है कि हेट स्पीच हमें प्रमोट नहीं करनी, इसको खत्म करना है, लोगों के खिलाफ हेट हमें प्रमोट नहीं करना है, जिससे वॉयलेंस आगे फैल सकता है, राइट। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 18 जून को। इसकी एक थीम है हेट स्पीच एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्सस, बिल्डिंग कोलिएशंस टू रिक्लेम इंक्लूसिव एंड सिक्योर एनवायरमेंट्स फ्री ऑफ हेट। नेक्स्ट आते हैं फिर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, 18 जून को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स को प्रमोट करने के लिए ग्लोबली। यूनेस्को एंड यूनाइटेड नेशन का आर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी वीक भी याद रखिए, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपका 16 से लेके 22 जून तक ऑब्जर्व किया जा रहा है। फिर इसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे, 18 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो बच्चे पीड़ित हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, राइट। एंड इसकी एक थीम याद रखेंगे अनअपोलोजेटिकली ऑटिस्टिक, ये थीम रहेगी। इसको बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेनबो कलर्स हैं ये, राइट। तो रेनबो इन्फिनिटी यहाँ का सिंबल रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं इंटरनेशनल पिकनिक डे, 18 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। पिकनिक के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड फैमिली के साथ मिलकर बाहर लेजर एक्टिविटी को प्रमोट करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मिलकर मील्स आउटडोर लेना एंड जॉय ऑफ पिकनिक का जो डे है, जो जॉय है पिकनिक का, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए यह डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन जिनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ पोर्चुगल एंड्रेस डूडा को सक्सीड करके। तो कैरोल नवरोस्की, राइट, इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन विच अपॉइंटेड राजीव मेमानी एज द प्रेसिडेंट फॉर FY26 सक्सीडिंग संजीव पुरी। तो CII के प्रेसिडेंट बन गए हैं राजीव मेमानी। नेक्स्ट, किन्होंने अभी रिसेंटली स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया जो कि बार्सिलोना में हुई थी, वो है ऑस्कर पिएस्ट्री। ऑस्कर पिएस्ट्री कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्कर पिएस्ट्री आपके UK से बिलोंग करते हैं, मैकलेरन के लिए ड्राइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया ODI से। ये वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के पार्ट रहे हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया इन ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में एंड 2023 में इन्होंने ICC मेंस वर्ल्ड कप जीता। नेक्स्ट, विच 2 ग्लोबल कंपनीज लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स कॉन्स्टलेशन, ये सपोर्ट करेंगे इंडिया के डिफेंस सेक्टर को विद फास्टर एंड मोर रिलायबल कम्युनिकेशन एज अनाउंस्ड इन मई 2025। तो ये है वनवेब एंड स्पेसएक्स। वनवेब UK का है, स्पेसएक्स USA का है, इलॉन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंड एक और चीज, स्पेसएक्स ने एयरटेल के साथ टाइप किया था एंड जियो के साथ टाइप किया था ताकि सैटेलाइट इंटरनेट लोगों के घर तक पहुंच सके। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन IPO एज पर द करंट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो मैक्सिमम इन्वेस्टर की लिमिट क्या है फॉर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर? 2 लाख रुपए तक का वो IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, निकारागुआ इनको रिसेंटली बिकेम 101st मेंबर टू ऑफिशियली अप्रूव द अग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडरीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। Next, as per RBI data released in June, Dash accounted for the largest share of total bank deposits at 59.5% in FY25. So, as per the RBI data released in June, which accounted
टर्म डिपॉजिट इट अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर, क्योंकि अब हम देख रहे हैं लोग बैंक में पैसा कम रख रहे हैं बल्कि वो पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर्स में, एंड वहां पर पैसा आपका ज्यादा हमें लगता हुआ दिख रहा है। जो आपकी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, सेविंग डिपॉजिट्स हैं, करंट डिपॉजिट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमें गिरती हुई देखिए। टर्म डिपॉजिट स्ट्रॉन्ग थी विथ 59.5% डिपॉजिट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसने अभी जून 2025 में प्रोजेक्ट किया इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर FY26 एट 6.3% इन देयर रिपोर्ट, जो कि है टैकलिंग अनसर्टेनिटी रिवाइविंग ग्रोथ। तो ये OECD के द्वारा प्रोजेक्ट की गई थी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट। देन आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन जिनको इलेक्ट किया गया 14th प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया सक्सीडिंग योन सुक यूल। तो कौन बने हैं, वो हैं ली जे म्योंग, राइट। ये इलेक्ट किए गए 14th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है साउथ कोरिया। नेक्स्ट, ACC ने अभी अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ स्वरूप कुमार शाह का टेन्योर एज MD एंड CEO ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट IPL के हिसाब से बतानी है। ऑप्शन A एंड B सही है, C गलत है। C कह रहा है सूर्य कुमार यादव इन्होंने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीता विद अ प्राइज मनी ऑफ 10 लाख रुपीज। तो नहीं, सूर्य कुमार यादव नहीं, साई सुदर्शन इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब ऑप्शन तीनों सही रहेंगे। नेक्स्ट, 39th, कॉस्पास सरसाट that is space system for search of vessels and distress search and rescue satellite aided tracking joint committee meeting for the first time 27 मई को हुई। किस कंट्री ने इसको होस्ट किया, तो ये UAE के द्वारा होस्ट की गई थी। नेक्स्ट, मेंशन द इंडियन यूनिवर्सिटी दैट रिसेंटली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शीप इन मे यूजिंग CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो शीप में जीन एडिटिंग की गई है, एंड कौन सी है वो इंडियन यूनिवर्सिटी, वो है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द न्यू यूनिफाइड हेडक्वार्टर ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यू दिल्ली ऑन 5 जून। तो किसने इनॉग्रेट किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ड्यूरिंग अ 3-day विजिट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पराग सेंटियागो पेना प्लास्किस्टो टू इंडिया इन जून, यूनियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडिया डॉक्टर S जयशंकर एंड रूबेन रेमरेज जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं पराग के, इन्होंने एक MOU साइन किया, राइट, टू इस्टेब्लिश व्हाट, एक जॉइंट कमीशन मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जून विच 2 वेटलैंड्स इन राजस्थान जिनको न्यूली डेजिग्नेट किया गया एज द रामसर साइट्स। तो 2 नई रामसर साइट्स ऐड की गई हैं, दोनों राजस्थान में हैं, एक है खिचान एंड दूसरी है मेनार। तो अब राजस्थान में तो हो गई हैं 4 रामसर साइट्स, एंड इंडिया की टोटल अगर हम देखें तो 91 आ गई है, जो कि हम 3rd लार्जेस्ट ग्लोबली हैं। फर्स्ट पे है UK विद 175 रामसर साइट्स इन UK, एंड सेकंड पे आ जाता है मैक्सिको विद 142 रामसर साइट्स, एंड इंडिया 3rd पोजीशन पे है विद 91 रामसर साइट्स। एक और चीज, ये जो मेनार है ना, इसको बर्ड विलेज के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं, इंडिया ने अभी जीती प्रेसिडेंसी ऑफ डैश अ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी 2025 से 28 टर्म के लिए। तो इंडिया इन्होंने प्रेसिडेंसी जीती ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, राइट, एंड 2025 से 2028 टर्म के लिए इनके द्वारा ये जीती गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्टेड 5 कंट्रीज एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2026-27 टर्म के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग दैम। तो इसमें से अगर हम देखें तो नॉर्वे इज नॉट अमंग दैम, नॉर्वे की जगह याद रखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो अब लेटिविया, लिबेरिया, कोलंबिया एंड बहरीन, राइट, ये सब इसमें रहेंगी, मार्क करेंगे, जो कि 2 साल के लिए अभी यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं एज द यूनाइटेड नेशंस नॉन परमानेंट मेंबर। ये किनको रिप्लेस करेंगी या फिर कौन सी कंट्रीज यहाँ से हटाई गई हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अल्जीरिया, गायना, सियरा लियोनी, साउथ कोरिया एंड स्लोवेनिया इनको रिमूव किया गया है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द म्यूचुअल फंड कंपनी दैट लॉन्च द इंडिया का पहला इंडेक्स फंड टैकलिंग BSE 1000 टोटल रिटर्न इंडेक्स इन जून 2025। तो मोतीलाल ऑसवाल्ड म्यूचुअल फंड के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, एज पर द अप्रूवल बाय CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन जून, वॉरबर्ग पिनकस LSE ये एक्वायर करेंगे 9.99% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड।
एंड 13.3 बिलियन डॉलर का एक्विजिशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। एक और जो कि है न्यूयॉर्क यूएसए बेस्ड इंटर पब्लिक ग्रुप ऑफ कंपनीज का बाय न्यूयॉर्क यूएसए बेस्ड ओमनिकॉम ग्रुप इनकॉर्पोरेशन, राइट। तो ये दोनों चीज याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये लोकेटेड है कहाँ पर? तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी असम में लोकेटेड है। यहाँ पर आपके 107 वन हॉर्न राइनोस देखने को मिले 2022 के राइनो सेंसस में, एंड यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है हमें राइनोस की, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड यहाँ पे 0 राइनो मोर्टेलिटी देखने को मिली। Moving on, which state in India achieved 100% success rate in the foundational literacy and numeracy assessment test under उल्लास नव भारत सशक्तता कार्यक्रम इन जून 2025? तो किस स्टेट ने इंडिया में अचीव करा 100% सक्सेस रेट? तो वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवाइज्ड मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट हेक्टेयर्स में अगर आपको सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना है इन मल्टी प्रोडक्ट SEZ एज पर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन अमेंडमेंट रूल्स नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जून 2025 में। तो मिनिमम रिवाइज्ड मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट्स कितनी है? तो 4 हेक्टेयर की मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया को इलेक्ट किया गया एज वन ऑफ द 80 न्यू मेंबर नेशंस टू द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कब से कब तक? 2026 से 2028 तक, 3 साल के लिए यहाँ पे इलेक्ट किया गया है, राइट। एंड इंडिया वन ऑफ द 18 नए मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पे इलेक्ट किए गए। इसके बाद आते हैं, इंडिया ने सिक्योर करी कौन सी रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि टॉप की गई डेनमार्क के द्वारा एट द 4th पोजीशन। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों पोजीशंस खाली थी, क्योंकि यहाँ पे लगता है कि इंडिया ने या फिर वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्रीज नहीं है जिन्होंने बहुत अच्छा काम करा हो आपकी क्लाइमेट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में, राइट, क्लाइमेट को ठीक करने में। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की डाटा रिलीज किया गया, जहां पे इंडिया ने सिक्योर करी विच रैंक? तो इंडिया की आ जाती है 10th पोजीशन, एंड टॉप किया गया डेनमार्क के द्वारा, बट 4th पोजीशन से यहाँ पर रैंकिंग आई है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी वाइस, इन्होंने फॉर्मली इनको ट्रांसफर वाइस के नाम से जानते थे, और इनको अप्रूवल मिला RBI से टू ऑपरेट इन विच कैटेगरी फॉर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस? पेमेंट एग्रीगेटर कैटेगरी में, राइट। इनको पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर कैटेगरी में यहाँ पे इनको अप्रूवल मिला है। सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर होता तो ये विद इन इंडिया पेमेंट रिसीव कर सकते हैं एंड सेंड कर सकते हैं मर्चेंट्स को, बट पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर है, तो मतलब पूरी दुनिया में कहीं पे भी जहाँ पे ऑथराइजेशन होगा इनको कंट्रीज का, वहां पर मर्चेंट से पेमेंट सेंड एंड रिसीव कर सकेंगे, हेंस पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने कंप्लीट किया एक्विजिशन ऑफ 25.18% इक्विटी स्टेक इन फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ 57 करोड़ रुपीज एज अ पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने डेसॉल्ट एविएशन एसए के साथ मिलकर 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन किए टू मैन्युफैक्चर द फ्यूसलेज ऑफ राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट इन इंडिया फॉर बोथ इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट। एंड ऐसा पहली बार होगा कि फ्रांस के बाहर हमें ये फ्यूसलेज का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगी। तो ये है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। फिर आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड किया गया ISO 22301 2019 सर्टिफिकेशन से? ये है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। Next students is our homework section. First question is, New Flamingo Sanctuary has been established where in India recently? Name that state. Then tell me, India's first e-waste, electronic waste eco park will be established where? Third question, tell me recently India's first underwater museum will be coming where? Fourth question, tell me recently Goa's product got GI tag, name that product. And fifth question, recently Punjab government, okay, I have given the answer, let's move to the next. Tell me recently which is that state that has performed the best, top or best in terms of wind energy generation, name that state. So these are your 5 homework questions students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.